Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Abhi. Today our experiment is experiment 12 to understand the modeling of electrical stimulation. Lab outline is lab objective, theoretical background, software implementation and then the lab objective है आप लोग का electrical stimulation. अब आप लोग का बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है क्या? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और उसका दूसरा नाम होता है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. इज़ अ टेक्निक यूज टू इलिसिट अ मसल कंट्रैक्शन यूजिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. के हम लोग अपनी आउटपुट को देखते हैं बट यूजिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि मतलब इलेक्ट्रोड जिसम पे प्लेस करके हम उसकी आउटपुट देख रहे होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोड्स कंट्रोल्ड बाय अ यूनिट आर प्लेस्ड ऑन द स्किन ओवर अ प्री डिटरमाइंड एरिया. प्री डिटरमाइंड एरिया का मतलब यह पड़ा कि जहाँ पर आपका इशू या जहाँ जिस एरिया में आपको तकलीफ हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं और अपनी आउटपुट को देखते हैं. अब आप लोग इस फिगर पे गौर करें तो आप लोग को ये पल्सेस नज़र आ रही हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थेरेपी है इज़ अ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट विद अ मल्टीट्यूड ऑफ यूजेस. ये थेरेपी ट्रीटमेंट है, इसका काफ़ी हर जगह पे यूज़ हो रहा है. इट कैन हेल्प द प्रिवेंट एट्रोफी एंड बिल्ड द स्ट्रेंथ इन पेशेंट विद द इंजरीज. इट कैन बी हेल्पफुल इन रिस्टोरिंग द फंक्शंस एंड रिड्यूसिंग द एडिमा स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रोक. अब जाहिर सी बात है किसी को स्ट्रोक हो जाता है, फालिज का या जो भी झटके वगैरह लगते हैं, ठीक है, उसके वो कह रहे हैं उसके मुंह यूज़ किया जाता है. इन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नॉन इन्वेसिव इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द पेशेंट स्किन कॉजिंग द टारगेट मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. कि जो पेशेंट का इफेक्टेड हिस्सा होता है उस पर इलेक्ट्रोड को प्लेस किए जाते हैं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें. A mild electrical current is sent to an area of the body that is receiving confused few or no signal from the brain after a stroke. वो कहते हैं माइल्ड इलेक्ट्रिकल करंट है ना उस एरिया में सेंड किया जाता है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है ब्रेन आफ्टर अ स्ट्रोक उसको हासिल करता है या नहीं करता. दिस स्टिमुलेट्स द बॉडी इनर इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ये इनर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वो कर देता है इंड्यूसिंग द न्यू कनेक्शन टू बी फॉर्म्ड इन द ब्रेन एंड इन टर्न अलाउइंग फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक है. उसका पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वर्क्स बाय मिनिमाइजिंग द नेचुरल वे द बॉडी एक्सरसाइज इट मसल. ये इस तरह से होता है कि बॉडी हम लोग की एक्सरसाइज करती है बॉडी के मसल. विद द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन द पेशेंट इज़ एबल टू मेंटेन द मसल टोन एंड स्ट्रेंथ दैट वुड अदरवाइज वेस्ट अवे फ्रॉम लैक ऑफ यूजेज. वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पेशेंट को क्या होता है मेंटेन करता है मसल को. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अब बेनिफिट्स क्या हैं बड़े आप लोग के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर के, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? देयर आर द मैनी बेनिफिट्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर. थेरेपी फॉर द स्ट्रोक पेशेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. थेरेपिस्ट एंड द डॉक्टर लाइक फाइंड दैट दिस थेरेपी वर्क्स इन मैनी डिफरेंट वेज टू बेनिफिट द स्ट्रोक सर्वाइवर. वो कहते हैं वो फाइंड करते हैं कि हम लोग इसको डिफरेंट वेज में स्ट्रोक सर्वाइवर के हम इसको यूज़ करते हैं. व्हेन द मसल्स बिकम पैरालाइज्ड आफ्टर द स्ट्रोक, वो कहते हैं जब मसल पैरालाइज हो जाते हैं स्ट्रोक के तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करता है हेल्प करता है फैसिलिटेट द मूवमेंट विच इज़ क्रिटिकल फॉर द रिकवरी. Sensory issues include the numbness, tingling, hot cold sensation or any abnormal sensation. हम इसको यूज़ करते हैं. Additionally, the electrical stimulation can be a very limit atrophy in immobilized extremities and can also be useful for improving the strength after a period of disuse. In addition to the sensory issues, stroke patient हम लोग क्या करते हैं फेस कर रहे होते हैं डिफरेंट चैलेंजेस को एडिमा की वजह से. अब एडिमा बेसिकली है क्या? एडिमा इज बिल्डअप ऑफ द एक्सेस फ्लूइड in tissues cavities and can be difficult to prevent the particularly in patient that are immobile. एडिमा बेसिकली क्या हो जाता है एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है हम लोग के टिश्यूज़ में, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हम लोग पेशेंट्स आप लोग की मूवमेंट नहीं कर पाते. फ्लूइड बिल्डअप कैन अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स. फ्लूइड काफ़ी उसकी वजह से अकर हो सकता है बट इट स्पेशली कॉमन इन स्ट्रोक सर्वाइवर हु हैव लॉस्ट द यूज ऑफ लिम्ब. द मसल इन द लिम्ब बिकम द dormant and are unable to move the fluid properly through the lymphatic system. The limb then become a sink for this fluid. Limb क्या करती है? एक्ट करती है सिंक के तौर पर इस फ्लूइड के लिए. आफ्टर अ स्ट्रोक सर्वाइवर क्या होता है फील कर रहा होता है पेन को. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कंट्रैक्ट द मसल. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं टू गेट द फ्लूइड मूविंग एंड इवेंचुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस द एंड्रोपनिस काम्स मसल्स एंड कैन पोटेंशियली हेल्प एलिवेट द क्रोनिक एंड द माइल्ड पेन. अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? बेसिकली इसकी दो मेन टाइप्स है स्टिमुलेशन की. एक है ट्रांसकेंटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और दूसरी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन. अब फर्दर उसकी आगे 9 टाइप्स हैं. TENS टेंस, इंटरफेरेंशियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, रशियन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, गैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड फेरेटिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन. पहली आप लोग की टेंस ट्रांसकेंटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन.
Transcutaneous electrical muscle stimulation is the oldest form of muscle stimulation. यूज़ फॉर ये एक पुरानी टेक्निक है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ द मोस्ट परवेसिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. टेंस इज़ अ थेरेपी दैट यूजेस द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट. तो लो वोल्टेज हम इसका इनपुट पे देते हैं ताकि वो पेन आप लोग का रिलीफ है. A TENS unit consists of a battery power device that deliver the electrical impulse through the electrodes placed on the. वो क्या होता है, बैटरी पावर डिवाइस होती है हम जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड जिसम पे प्लेस करते हैं और उसको नर्व को ट्रांसफ़र करती है. द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट नियर द नर्व वेयर द पेन इज लोकेटेड एट ऑल द ट्रिगर पॉइंट्स. जैसे आप लोग को इस फिगर में शो किया. सेकेंड टाइप है IFC इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. IFC थेरेपी यूटिलाइज द 2 मीडियम फ्रीक्वेंसीज इन अ मैनर दैट डजंट कॉज एनी मेजर साइड इफेक्ट. इसमें 2 मीडियम रेंज की फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं. The IFC is the same as low frequency treatment. The sensation induced by IFT will vary according to the different AMF settings. से उसको वैरी करता है. जैसे आप लोग स्पीकर में गौर करें, इसमें उसने कहा कि 2 मीडियम साइज़ की फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसी फिगर को उसने शो किया. हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होता है? A type of electrical stimulation essentially involved in a deep wound healing के हम इसको यूज़ करते हैं कि आप लोग का जो आप लोग की स्किन के इंटरनल पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. The process of electrical stimulation improve the healing time up to 3 times. Electrical stimulation process in high voltage improve the blood flow and replace the lost cells. This create a completely new area for healing and the process. Fourth type is the electrical muscle stimulation EMS. is primarily used in the facial muscle stimulation. फेस की हम इसको यूज़ करते हैं. Electrical stimulation is a newest technique to facilitate the pain and stress the relief without compromising the body metabolism. कि हम इसको यूज़ करते हैं कि स्ट्रेस को रिलीव करते हैं लेकिन विदाउट हमारी बॉडी का कोई भी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट किए बगैर. इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन मसल स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज़ आल्सो दी हाईली इफेक्टिव इन द वेट मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं. फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होता है? लो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द सेंसेशन दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू रिस्टोर द लॉस फंक्शनलिटी इन FES. वो कहते हैं लो इलेक्ट्रिक करंट हमें रिक्वायर होता है, ठीक है, जो स्टिमुलेट कर देता है बॉडी को. इन केसेस ऑफ एब्सोल्यूट पैरालिसिस और लॉस फंक्शनलिटी इज़ ऑफ द हाई ग्रेड वैल्यू. वो कहते हैं एब्सोल्यूट पैरालिसिस जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं हम उसमें इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव लॉस्ट द कंपैटिबिलिटी टू वॉक और. Neuromuscular stimulation. Neuromuscular electrical stimulation is applied to group of muscle. कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा मसल्स में अप्लाई कर देते हैं. ग्रुप ऑफ हेयर द रिपीटेटिव कंट्रैक्शन हेल्प इन रिट्राइविंग द लॉस्ट ऑफ फंक्शनलिटी. दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर रिट्रेनिंग एंड स्टार्टिंग द वीक यूरिनरी मसल्स में हम इसको यूज़ करते हैं. रशियन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. रशियन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मोडेलिटी इज़ अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जनरली यूज फॉर स्टार्टिंग एंड मसल री एजुकेशन. वो क्या कहते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसीज में भी यूज़ करते हैं बट इन मसल को स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है. करंट इज अप्लाइड इन द अल्टरनेटिंग पल्सेस और बर्स्ट मोड. कैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ये बेसिकली क्या होती है? इंटरप्ट डायरेक्ट करंट. इसको मैनली यूज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 30. इसमें इंटरप्शन दे देते हैं 30 पल्स पर मिनट. इन केस when the duration has increased, the frequency of the current is also reduced. जैसे आप लोग इस फिगर पे शो करें इनपुट और आउटपुट सिग्नल, जैसे हम लोगों ने एक पल्स दी, आप लोग देख रहे हैं आउटपुट पे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है. क्यों? क्योंकि 30 मिनट उसमें एड्रप्शन आ रही है पल्स पर मिनट. फेराडिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन क्या होते हैं? एन इंटरप्ट डायरेक्ट करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 हर्ट्ज ड्यूरिंग रेंज होते हैं 0.1 से 1 ms. हाईली इफेक्टिव इज इन्वर्टेड मसल एंड फील्स लाइक अ प्रिकलिंग सेंसेशन विद द एप्लीकेशन. इनपुट पे आप लोग देख लो ट्रायंगुलर टाइप है बट आउटपुट पे आप लोग का स्केयर टाइप वेव फॉर्म आ रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रेंज वेरी कर रही है. अब अगर वीडियो मैं इसको प्ले कर देती हूँ.
Somewhat
रिजल्ट तो इसके एज इट इज़ कोई नहीं है कि जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि उसने इलेक्ट्रोड अपने उस पार्ट पे लगाया जहाँ पे वो इफेक्टेड है, मसल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसने उसके आप लोग की टांग पे लगाया, लिम्ब का हम लोगों ने पार्ट लिया हुआ है। जैसे उसने इलेक्ट्रोड लगाया, उसने एक डिवाइस यूज़ की हुई है हार्डवेयर टाइप, वो वहाँ पे अपने पल्सेस इलेक्ट्रॉनिक उससे चेक आउट